सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया। Platform sekitarnya ada 26 platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya itu diberhentikan dengan alasan platform tersebut belum terdaftar sesuai aturan yang baru dan dianggap menyebarkan disinformasi gitu. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Kusbu di Nepal. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Di video kali ini aku akan mengabarkan keadaanku sekarang karena banyak teman-temanku yang mengkhawatirkan keadaanku. Kemarin banyak sekali di kolom komentar yang bertanya-tanya keadaan Kak Dewi seperti apa di sini karena demonstrasi yang terjadi di Nepal gitu ya. है कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है, पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है, फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्ट। Terima kasih untuk teman-temanku yang telah mengkhawatirkan keadaanku di sini gitu. Dan di sini aku baik-baik saja bersama keluargaku dan tidak terjadi apa-apa untuk di daerahku ini, di kota sini. Dan untuk di kampung itu terjadi aman seaman-amannya. Yang sangat demokratif itu terjadi di kota-kota besar seperti Kathmandu, Pokhara, Biratnagar seperti itu dan lain-lain. Birgon pun juga terdapat pembakaran di tempat menteri. Dan di sini aku dengan keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengkhawatirkan keadaanku di sini. काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती। Di video kali ini aku juga mau cerita kepada kalian semua tentang apa yang sedang terjadi di negara Nepal. कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे जाते हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल। ये खबर फैलती है जनता में और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। Ini sebagian pengetahuan yang aku ketahui dan aku juga mendapatkan informasi dari media sosial, dari suamiku, dari TV-TV kayak gitu. Jadi di sini aku mengumpulkan informasi-informasi yang aku ketahui dan aku akan sharing kepada teman-teman sekalian biar teman-teman juga tahu, juga paham apa yang terjadi di negara Nepal di sini ya. रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति। Mungkin bagi teman-teman semuanya karena sudah banyak berita yang beredar di TV nasional Indonesia, mungkin banyak sekali yang sudah paham, yang sudah mengetahui apa yang sekarang terjadi di sini.
Dan mungkin aku menjelaskan di sini untuk sebagai koreksi saja begitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada perkataan yang kurang jelas yang nggak bisa dipahami oleh teman-temanku semuanya. Dan kalau ada kurang lebihnya juga mohon maaf karena aku juga mendapatkan informasi ini dari media sosial kayak gitu. Jadi kita sama-sama saling tahu aja. Semoga di kedepannya aku berharap dengan adanya demonstrasi besar-besaran ini menjadikan negara Nepal nanti semakin maju lagi, semakin berkembang, dan warga-warga yang terjadi kemiskinan atau kemunduran zaman atau sebagainya itu bisa menjadikan kemajuan dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak di nantinya gitu. Semoga negara Nepal tersebut हमारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। साल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। करते हैं टिकटॉक पर भी #नेपो किड्स और #नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। menjadi negara yang lebih maju dari kemarin gitu ya. Ya teman-teman semuanya, aku sekarang lagi di bawah pohon yang biasa aku dudukin itu, di bawah pohon pisang dan di bawah pohon duet, biar suasananya itu berbeda-beda walaupun orang yang sama dengan orang yang sama gitu. Semoga bisa menjadi daya tarik kalian sendiri untuk menontonnya. Ya walaupun cuma di sekitar rumah, mungkin ada yang berbeda di setiap video aku gitu ya. Jadi langsung ke topiknya saja, dan mohon maaf kalau suara gagaknya itu lebih keras dari suaraku. मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बना पॉलिटिशियन के पास नहीं थी बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र। इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. Tadi sudah aku usir-usir tapi datang lagi kayak gitu karena di samping rumah aku itu terdapat banyak pohon dan mungkin di situ banyak buat berteduh para gagak-gagak gitu, parah. Dan selanjutnya kembali ke topik. केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते तो कभी पुष्प कमल दाहाल। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल्स दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद ले। करप्शन केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को Topik dalam pembahasan vlog hari ini, apa yang sedang terjadi sebenarnya di negara Nepal tersebut. Jadi kronologinya di tanggal 4 September 2025, pemerintahan Nepal memperhentikan platform, sekitarnya ada 26 platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya itu diberhentikan dengan alasan platform tersebut belum terdaftar sesuai aturan yang baru dan dianggap menyebarkan disinformasi gitu. डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं। इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच
70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए खिलाफ है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया एप्स पर लगा बैन हटा दिया गया और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है। यहां तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। Blokiran ini menjadi pemicu kemarahan Gen Z atau pemuda di negara Nepal dan juga sudah frustasi terhadap korupsi sistemik, nepotisme dalam politik, pengangguran tinggi yang sedang terjadi di antara anak muda zaman sekarang, dan juga kurangnya reformasi politik dan ekonomi. Jadi itulah alasannya kenapa dan terjadinya demonstrasi di tanggal 7 September 2025 sudah diberhentikan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan, dan aku di tanggal 7 September malam itu sudah memakai VPN karena aku membutuhkan aplikasi YouTube, baru bergabung di YouTube dan sudah diberhentikan, jadi aku memilih memakai aplikasi VPN. Dan di tanggal 8 September terjadi demonstrasi besar meletus di Biratnagar, Kathmandu, Damak, dan Itahari. Di sini ribuan pelajar turun ke jalanan dan melakukan demonstrasi dan masih memakai pakaian yang dikenakan pakaian seragam gitu ya. Banyak pelajar-pelajar yang masih memakai pakaian seragamnya dan mencoba masuk ke gedung parlemen federal. Dan di sini polisi menanggapi dengan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan juga peluru tajam. Korban setidaknya ada 19 orang mahasiswa dan banyak ratusan orang yang luka-luka gitu. Dan setelah tekanan publik, akhirnya di tanggal 9 September pemerintah memberhentikan larangan sosial media tersebut dan membuka kembali platform yang telah diberhentikan tadi. Dan juga diumumkan kompensasi bagi korban dan membiayai penuh korban luka-luka sampai nantinya sembuh total gitu ya. Dan setelah disetujui dua kompensasi tersebut, demonstrasi makin menjadi-jadi dan meluap, dan terjadinya pembakaran di rumah menteri, rumah presiden, dan juga gedung parlemen dan istana negara dibakar, dijarah gitu. Dan ada juga market-market yang terdekat di daerah Hitauda dan Chitwan. Ada juga market besar yang berdiri di sana juga dijarah dan dibakar. Dan aku juga mendengar adanya berita kalau mau ada penjarahan di market yang dekat rumahku itu di Birgon. Tapi di sini dijaga ketat oleh militer, dan adanya militer tersebut, orang-orang yang sudah berkumpul di depan market tersebut dibubarkan dan diberitahu betul-betul sama militernya, jadi tidak ada penjarahan di Birgon ini ya. Ada setidaknya 3 penjara yang diserbu juga. Ada penjara Jumka, Kasu, dan Naki. Aku juga nggak tahu itu penjara di daerah mana, tapi terdapat informasi 3 penjara itu dijarah, di demo, dan kurang lebih ada 3.000 pidana yang kabur. Disinilah di tanggal 9 malam itu semua militer dikerahkan untuk menjaga, mewaspadai adanya kericuan yang terjadi di malam tanggal 10 tersebut. Jadi militer di sini dikerahkan di semua daerah yang terdapat di negara Nepal ini. Dan selanjutnya di tanggal 9-10, PMKP Oli mengundurkan diri dari jabatannya menjadi Perdana Menteri sementara Karetaker. Di sini wali kota Kathmandu, Balen Shah atau Balen, ditunjuk sebagai tokoh penting yang didukung penuh oleh generasi anak muda atau Gen Z.
Dan tuntutan Gen Z semakin keras, di antara salah satunya adalah pembubaran parlemen, pemerintah yang eksklusif, dan pemilu baru. Asasi dan reaksi dunia, Komisi HAM Nasional mengecam adanya penggunaan peluru tajam dan meminta investigasi independen. Dan juga Amnesty Internasional dan lembaga internasional menuntut pertanggungjawaban dan keadilan untuk korban. Jadi seperti itulah gambar berita yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Aku juga mengikuti di sosial media, di media sosial gitu. Jadi informasi ini aku dapatkan dari media sosial yang aku ketahui. Dan semoga dengan adanya demonstrasi ini menjadikan negara Nepal lebih maju lagi, pemerintahannya, warganya, pokoknya semuanya. Doa terbaik buat Nepal, semoga segera membaik, segera kondusif. Dan untuk saat ini lebih baik di rumah, berhati-hati dan juga waspada gitu, karena ya masih situasi itu tidak kondusif. Jadi mohon pengertiannya bagi teman-teman semua yang menyuruhku untuk melakukan video ini, video itu, ngevlog ini, ngevlog itu. Mohon maaf, aku belum bisa menjalankannya karena situasinya juga seperti ini. Nanti kalau situasi sudah kondusif, nanti bisa pergi kemana-mana dengan aman dan damai gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah dukung aku, sudah support aku. Terima kasih banyak, semoga menjadi perhatian untuk teman-temanku semuanya. Dan lingkunganku kurang bersahabat dengan video yang aku sampaikan hari ini, mohon maaf. Ada juga gagak, orang-orang, anak-anak yang sedang bermain-main, berisik-berisik kayak gitu, mohon maaf dan bisa kalian mengerti ya. Dan cukup sampai di sini vlog hari ini, semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua. Dan aku dari Kusbudi Nepal mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua, teman-temanku semuanya yang sudah mendukungku. Dan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.